सर मुझे लगता है कि मेहता सर आपके साथ नेट की बहुत इश्यूज हैं कनेक्टिविटी के, तो मैं सचिन केतकर सर का परिचय कराना चाहूँगा। Sachin C. Ketkar is a bilingual writer, translator, editor, blogger, and researcher based in Baroda, Gujarat. His collections of Marathi poetry are Jarasandha, Jarasandhacharya, blogger Kahin Ans, 2010, and he has written one more book that is also in Gujarati, I think. His poem has been translated into Gujarati, Hindi, Urdu, Malayalam, Telugu. Uh, he has written one book that is Changalya Kavitrachi Statutory Warning, समकालीन मराठी कविता, जगत की कारण अनि भाषांतर, September 2016, is a collection of Marathi article on contemporary Marathi poetry, globalization and translation. Sorry for my wrong pronunciation. My wife is Marathi, but I'm not able to read Marathi properly, so I'm very much sorry for that. I will try to learn more from her also in near future. He has also written a book in English that is Skin, Spam, and Other Fake Encounters, Selected Marathi Poems in Translations in 2011, Migration Words, Refractions of Indian Translation Studies in 2010, and A Dire for the Dead Dog and Other Incantations, 2003. He has extensively translated present-day Marathi poetry, most of his collections in anthology, Live Update, and anthology of recent Marathi poetry in 2005, edited by him. Apart from rendering the 15th century Gujarati poet Narsingh Mehta for his doctoral research, he has also translated numerous modern Gujarati writers like Ghulam Muhammad Sheikh, Bhupen Kakkar, Jayant Khatri, Rajendra Patel, Jaydev Shukla, Rajesh Pandya, Nazir Mansoori, and Mona Patwala into English. He won Indian Literature Poetry Translation Prize given by Indian Literature Journal, Sahitya Academy, New Delhi, for translation of modern Gujarati poetry in 2000. He has translated fiction of George Louis Borges, Ted Hughes, and Adam Thorpe into Marathi. He worked as professor in English Faculty of Art, the Maharaja Sayaji Rao University of Vadodara. Currently, he is working on a critical history of Marathi literature. With this brief introduction, I would like to invite Professor Sachin Ketkar ji to deliver his talk on this auspicious occasion. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Dr. Ajay Singh. I hope I am audible enough. Yes, sir. Yes. And yeah, so first of all, I would like to thank Dr. Ajay Singh for that introduction, and I want to congratulate him for undertaking this remarkable exercise, because Professor A.K. Singh was loved by many people across the country. And I remember the shock that I received when last year he was no longer with us. I was with him in a seminar in February in Oro University, and the news that followed only some time later was extremely shocking. And his work has been tremendous, as all of us have been recollecting. So first of all, I would like to congratulate Ajay Kumar Singh and the Central University of Jammu for having this series begin this year. I would also like to thank Dr. Ajay Singh for giving me opportunity to share my views and memories of Professor Singh with this distinguished panel. Means Professor Kamal Mehta, Professor Renish Mishra, and others are such senior veterans in their field,
and giving me an opportunity is something for which I'm thankful to you. Uh, my association with Professor Singh goes back to 2000, year 2000, and before that, when I was just freshly working on my own doctoral research. So, A.K. Singh's contribution in mentoring many people is also something that we should all acknowledge at this time, because he not was not merely a scholar but also somebody who mentored entire generation of scholarship in India. So this is one very important thing that we should be remembering at this moment. I was invited because of my discipline is comparative Indian literatures and translation studies. I remember being invited to several seminars by Professor Singh, starting with one in Gandhinagar many years ago, around 21 years ago. And then I was part of a very remarkable refresher program that Professor Singh had arranged in Saurashtra University, where I had good fortune to listen to some formidable leading scholars of the time, like Professor Kamal Mehta, who is with us, but also Professor Kapil Kapoor, Professor Makaran Paranspre, Professor Sridhar, who was the head of Kutch University at that time, Professor Jagdish Dave, and many more. Means that refresher program that I attended, that was somewhere in 2002 or so, was one of the most educative periods of my life as a researcher. And he very generously invited me again to equally interesting and informative and educative 1 week study program at IIAS Simla on history of translation, where I shared my views about history of translation in Marathi. But I got opportunity to listen to a whole range of scholars from all languages, and I learned so much from that was one of the eye-opening sessions that I have attended. So Professor Singh's generosity and affection for me is something that I still fondly recollect. Uh, Having said that, what I'm going to do today is I'm going to talk about a very important speech that he delivered in BHU, Banaras Hindu University, 20 years ago, called The Indian Scholar. And he gave, I think, 2 lectures, if I'm not mistaken, in BHU. And Indian scholar, the speech that he gave is in some way encapsulates his own intellectual program. And one of the ways of paying tribute to this great man, in my view, is to again rethink, re-engage with his intellectual project as a scholar. So that's what I'm going to do. And I will try to be as brief as possible given the paucity of time that we are having. The Indian Scholar was delivered as Sri Purohit Swami Memorial Lecture in Banaras Hindu University, Varanasi, in the year 2001, when Professor Singh was the head and professor at Saurashtra University. So this is what I have with me, and I will just talk about his ideas. For there are many people who are very new, who are listening to us, would get an opportunity to understand Professor A.K. Singh as a formidable scholar. What was his contribution, and how would they benefit from his writings? So the first feature is the whole title. Indian Scholar itself is reminiscent of the great speech given by Ralph Waldo Emerson many hundred years ago. And Professor Singh's essay, I think, resonates and has echoes of Emersonian talk, and he consciously alludes to Emerson's speech on his in his speech that he has delivered. But at the same time, he also gives very interesting metaphors drawn from indigenous traditions of knowledge. So this dialogue between the Western and the Eastern is something that is characteristic of many leading scholars of his generation. And the essay is replete with Emersonian
echoes to Emersonian's essays, including another great essay by Emerson called Self-Reliance, which later on became such a leading point in Gandhian thought. And Gandhi, of course, is evoked in this essay, in his speech that he gave in the year 2000. So the first part that he starts by emphasizing the need for dialogue in an era of state of dialogue lessness that is emerging in India, something which I found fascinating. Even after 20 years, this speech was delivered. Almost 20 years is a kind of whole country is no longer the same today. But that is what he talks about by stressing this need. At the same time, he talks about the model of Indian scholar, or what Indian scholar should be. And for that, he evokes various metaphors. And most fascinating metaphors that I found was the family of Shiva and Shiva himself, uh, because he was delivering this speech in Kashi. So this is, I think, one of Professor Singh's greatness, that he came across such metaphors for the right occasion in the right place. And the metaphor that he uses is the family of Lord Shiva, which is full of contradictions. And he says that vehicle of Ganesh, rat, is threatened by the snake and the peacock, which are associated with Kartikeya. And then he talks about how Nandi, who is vehicle of Lord Shiva, and the vehicle of Parvati's lion, how lion and the bull cannot actually go together. So Shiva himself Shiva's family is full of opposites and contradictions. However, Shiva, being a lord who seems to uh, bring together all these contradictory elements, is the god and the ideal that we should strive to look forward to as Indian scholars. And Professor Singh says that Shiva is also god of time, and Okay, sir. he talks about how his Abhay Mudra is what makes various opposite qualities or opposite tendencies in the family of Shiva come together. So this Abhay Mudra is what the Indian scholar should imbibe, and Professor Singh himself had this quality. He embodied these virtues of Abhay Mudra and bringing contradictory ideological and discursively different things together in a dialogic form. So one of things that we appreciate and we should appreciate is this platform that he provided for various kinds of thoughts to come together in a form of dialogue. And Professor Singh himself acknowledges Namwar Singh in his essay, and all of us are aware of Namwar Singh's and his ideology. And Professor Singh says that Namwar Singh uses the title of his book Vad, Vivad, and Samvad, which could have been an appropriate title for his speech on Indian scholar as well. So I think this is the model that Professor Singh worked with throughout his life. And like Lord Shiva being the ideal of Indian scholar who would himself be drink a poison and hold it in his throat, at the same time bring together disparate ideological positions together. And this is the greatness of A.K. Singh that I realized when I was doing my refresher course, where we had people from various ideological orientation, like Professor Sridhar and Professor Jagdish, the way Professor Makran Paranspe, Professor Kapil Kapoor, and so on and so forth. So that is one of the characteristics which will help us to understand Professor Singh and his contribution in a greater way. So dialogism is something that underscores his own project. The other very important point that he makes is about when you talk of Indian scholar, what do we understand by Indian? And he goes on to talk about various anxieties of identity and various contestations around the idea of Indian. So who is Indian or what is Indian is a contested territory. And he goes on to emphasize
that Indian cultural realities are singular only in grammar, but they are plural. And hence, Indian scholar is not a singular but a plural term. So, that is a very important insight on which Professor uh, Singh built his own philosophy of research and knowledge upon. And then he then sets up how Salman Rushdie's idea of dismissiveness about India was countered by Shashi Tharoor's notion of Indian identity. And he uses Shashi Tharoor's metaphor of thali, with lot of food and diversities in it. So, uh, Professor Singh emphasized this diversity and plurality and the dialogue as one of the building foundation of his own project. Uh, Another thing that he emphasizes is interconnectedness of various multiplicities and diversities in India. So diversities in India are not isolated from each other, but they are profoundly connected. And this interconnectedness gives rise to plurality and differences. So you have to acknowledge this interconnectedness as well as differences when you think of Indian culture. And that is what he says here, that Indian is premier, dynamic, and inclusive category. As a consequence, Indian tradition is continuous, cumulative, integrative, and inclusive, hence pluralistic, interconnected, and holistic. That is the cornerstone of Professor Singh's philosophy that he built upon. And in my view, it is very important to emphasize interconnectedness and shared traditions and continuities. But at the same time, we should also be looking at disjunctures, discontinuities, and ruptures when we think of intellectual and philosophical traditions in India. You cannot have a simplistic, homogeneous notion which he himself rejects, that you often find when we think about Indian society. And he talks about Indian poetics as a very important, that became one of his very important ideas on which he worked extensively. And I remember an interview of Professor Namwar Singh, which A.K. Singh had conducted, and he had translated that, where Namwar Singh insists that we should not be collapsing Sanskrit poetics as Indian poetics. Means Indian poetics is a larger category to which Sanskrit poetics is a very important component of, but not the same as. So that is the intervention which Namwar Singh makes, and that is the dialogue which Professor A.K. Singh has with him. Uh, I will just mention a couple of other points, and I will stop because of paucity of his time. So, what is so important contribution of Professor A.K. Singh? Then, in my view, there is a critique that Professor Singh makes about certain universalistic claims of Western thought and Western paradigms of knowledge, which seem to be a kind of universal and given rather than being historical. So he critiques this Western paradigms, and he talks about repression of various Indian intellectual traditions, Indian creativity traditions in bhashas as well as in Sanskrit, that English studies and comparative literature has suppressed or marginalized. Now, this is a very important intervention that Professor Singh has made. And after this speech was made almost over 20 years or so, in my discipline of English studies, I see there is a greater engagement with the so-called regional literary creativities as well as with Sanskrit traditions and so on. So I think Professor Singh's intervention, right, is a formative intervention in the state of English studies discipline that we have today. So I think today it has become a commonplace for a student of English studies to research Gujarati, Marathi, Bengali, Hindi, Punjabi, or Malayalam traditions. This is something, a profound shift that has happened in disciplinary history of English in India.
and something which started in the late 80s as the crisis of English studies debate after 80s, to which one of the important intervention was of Professor Singh. So this is something very remarkable. And he also talks about repression of Indian critical thoughts, modern as well as the Sanskrit and various kinds of thought which has happened in English studies, where we don't really bother about people like Bhartendu Harishchandra. And as a critic, when we think of criticism, the prescribed syllabus that we still have, if you look at Indian criticism or of criticism that we have in university syllabi, it's all about the Western paradigms, but we don't emphasize these Indian critical thinkers when we think about literary criticism. And that is something that has led to his current project, which Professor Mishra was talking about critical discourses in India, which he was doing. Uh, I would like to come towards the end of my talk by mentioning the ideal of Indian scholar as that of self-reliance. And Professor Singh talks about that we have heard of, about, we have listened to the muses, the colonial muses, the Western muses for too long. And this is the metaphor that is directly taken from Emerson's great essay, Indian Scholar, where he says that we have been listening to the European muses for too long, and Emerson insists that an American scholar should come up with American intellectual tradition rather than relying solely upon European tradition. That is what Emerson is saying. And Emerson then has famously talked about self-reliance, an idea that is very important for an Indian scholar as well, because Professor Singh argues that in globalization, the agenda is still set by the multinational corporations which are neo-colonial. So we should resist the terms and conditions of Western academia and set our own agendas and our own programs rather than playing to the gallery of the West. So this is a very important idea. And it is in this context that he places nationalism in in the academic or in research projects, where he talks about uh, Tagore and Gandhi debate, the very famous that has happened. Uh, and he says that instead of looking at nationalism from Tagorean perspective, it is far more fruitful to look at nationalism from Gandhian perspective, where happy nationalism can lead to happy internationalism. That's the phrase he uses. And thus, nationalism can become a project to resist colonial power as well as the neo-colonial agendas put forth by multinational corporations and the globalized world that we live upon. And he insists on self-respect, like Porus against Alexander. And I would like to end with very profound insight that he has made uh, uh, here. And he talks about that it's not sufficient that there should be a dialogue between home and abroad. We should also be having dialogue between home and home. And that is a very important intervention that Professor Singh brings about. And this dialogue between home and home is a very important thing that all of us in English studies should keep in mind even today. So in some way, in many ways, I am on the same page as Professor Singh in insisting upon the dialogue between home and home, between we setting our own agendas, we engaging with creativity in our own languages here, and our own intellectual traditions is something that we should be talking about, discussing, rather than just like parroting, to use his phrase, parroting Derrida or Foucault. We should be looking at the intellectual traditions here. So at the same time, my view of these traditions is not that of purely continuities, but I'm also interested personally as a researcher in disjunctures, historical shifts, discontinuities, and ruptures like the one by British colonialism happened. There would be many ruptures like the decline of Buddhism, and I'm sure he was evoking Kumarji
in a big way when he was talking about translation, and he has written about Kumarji. And so there are many junctures and disjunctures that we should engage with, and not allow the Western academia to set the terms of discourse for us. So these are my views about his great essay. The second essay is his second speech that he delivered on decolonization of knowledge, something which I'm not going to talk about, but that is what he emphasizes in his first speech as well. So these are some of the things which I have to say, and in the book that I have completed, in the acknowledgement, I have written how I first began by sending out my book, the draft that I was working out to Professor Singh, and somewhere by the time I reached halfway through, he is no longer with us. He is a big loss to me personally as well. So with that, I want to thank Dr. Ajay Singh for providing me platform and congratulate him again for having such an important event. And I wish him all the best for his future endeavors and having such kind of series in the future. So I want to thank you again. Thank you, sir. Thank you very much for your thought-provoking lecture. And you have mentioned about Professor Singh contribution as well as his lecture. So, as he usually ponder about to use our own technical terms like Vishwa Sahitya, Vishwa Mano, Dharma Shakti, Chiti, Shiksha, Dharma, etc. I remember one slok, and I would like to recite that slok. Bahwo gurvo loke शिष्य चित्त बहवो गुरुवो लोके शिष्य वित्त पहार का क्वचितु तत्र दृश्यन्ते शिष्यस्य चित्त पहार का। यानी कि हमें दुनिया में बहुत सारे गुरु आजकल दिखते हैं, जैसे मैंने टीचर वाली बात कही थी, जो कहा जाता है कि धन हरण करने की बात करेंगे, लेकिन वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने शिष्यों का चित्त हरण किया। तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में चित्त के साथ उनसे जुड़े रहे और बहुत कुछ सीखा। तो इसी क्रम में अब मैं कमल मेहता सर से आग्रह करूंगा, उनके साथ कनेक्टिविटी का इशू बार बार आ रहा है, मैं एक बार आखिर में प्रयास करने की कोशिश करूंगा, शायद वहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। कमल मेहता सर and Sachin sir, very much thank you to you. Hello, one second. Okay. It's my pleasure. It's my honor and pleasure to be here. Yes, yeah. Thank you so much, sir. Mehta sir, please start your talk, sir. Hello. Yes, sir. You are audible. You are audible now. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Okay. Respected Chair in absentia, Honorable Vice Chancellor, Central University, Jammu, Professor Ashok Ji Aiba. Hello. 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 मुझे लगता है इंटरनेट की ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू, क्योंकि उन्हें हमें एज ए सेकेंड स्पीकर इनवाइट किया था, बट उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, शायद उनको आज सुनना मुश्किल हो रहा है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर मैं इस कार्यक्रम को हम रजनीश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुन पा रहा हूँ।
सर हाँ, मुझे सुन पा लगता है मुझे लगता है कमल मेहता सर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, वो इंटरनेट के इश्यूज की वजह से। तो मैं जी अब जी। इस कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन से पहले आप दोनों से ही, आपसे और जगदीश सर से आग्रह करूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं सजे में, उनके सवाल तो कम है बट वो आगे, जैसा कि हमारे कुलपति जी ने भी कहा था कि इस विषय पे और भी चर्चाएं होनी चाहिए, और हम कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों के सानिध्य में इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने का, विशेषकर जम्मू कश्मीर की धरती पर और जम्मू कश्मीर परिक्षेत्र में। तो मैं आप ही दोनों से आग्रह करूंगा कि आप कुछ कुछ शब्दों में अपने कुछ कंक्लूडिंग ब्लेसिंग्स भी दें हमारे जो सुनने वाले युवा दर्शक हैं उन सबको। जगदीश सर। जी जी, आपका बेहद शुक्रिया। जैसा कि अभी प्रोफेसर केतकर ने कंक्लूड किया कि प्रोफेसर सिंह के लिए एक बहुत ही बिफिटिंग ट्रिब्यूट है कि जो उनके वर्क्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, उसको हम और गहराई से समझें और उसे अगर संभव हो तो उसे अपने जीवन में लाएं। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, उसके प्रति उनके क्या अलग अलग दृष्टिकोण थे, व्यू पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी प्रोफेसर रजनीश मिश्रा जी ने बताया और केतकर जी ने भी बताया, और खास तौर पे मुझे लगा कि उनके एक भाषण को लेकर के जो उसके बीच में एक तरह का अंतर्गुम्फन है भावों का, और उसमें मेटाफर्स का इस्तेमाल है, और उनके माध्यम से जो कंटिन्यूटी है, जो एक डायलॉजिक टेक्निक है, जो खास तौर पे भारतीय साहित्य की, भारतीय ज्ञानात्मक साहित्य की विधा है, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें स्पष्ट हुई होंगी। और जो हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में सहभागी रहे, अगर उनकी रुचि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य के विशिष्ट पक्ष क्या क्या है, इनको अगर गहराई से जानने की उत्कंठा रहेगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के उत्तर उन्हें आज इस चर्चा के माध्यम से मिले होंगे। प्रोफेसर रजनीश मिश्रा ने खास तौर पे दो बातें, और विशेष रूप से जो नैरंतर्य है भारतीय ज्ञान परंपरा में, हम अलग अलग कालों में अलग अलग विचारों के उद्भव को देखते रहे हैं। उसे विचारकों ने, चिंतकों ने, रचनाकारों ने आत्मसात किया और उसको आगे बढ़ाने का कार्य लगातार किया। और लोक और शास्त्र की आपने भी उसका उल्लेख किया कि हम लोक और शास्त्र, और मिश्रा जी ने कहा था आगम और लोक, तो निश्चित रूप से जो शास्त्र है उसका जो ज्ञान है, और लोक में जो ज्ञान, जिसको हम एक प्रमाणित रूप में लोक के ज्ञान को भी एक प्रमाणिक ज्ञान मानते हैं, उसको किस तरह से साहित्य में अंतर्गुम्फित किया जा सकता है। ये सारे पक्ष बहुत ही बारीकी के हैं, लेकिन साहित्य अन्वेषियों के लिए मुझे लगता है कि इन पर लगातार जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। तो आज इस चर्चा से प्रोफेसर अवधेश सिंह जी की जो प्रथम पुण्यतिथि है, इस अवसर पर आपने जो आयोजन किया, उसके आलोक में ये चर्चा बहुत ही उपयोगी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। अब मैं रजनीश सर आपसे भी आग्रह करूंगा। हेलो जी, रजनीश सर। जी जी, ये तो थोड़ा तकनीकी व्यवधान के कारण हम प्रोफेसर मेहता जी को नहीं सुन पा रहे हैं, इसका तो अफसोस रहेगा, लेकिन इसकी क्षति को किसी अगले अवसर पर होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। उनको सुनने का अवसर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनसे बहुत सारी बातें जानने को मिलती, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर सिंह जी के साथ उनका सानिध्य रहा, और सहकर्मी के रूप में भी बहुत सारे नए नए पाठ्यक्रमों को, नए योजनाओं को लोगों ने कार्यान्वित किया है। इस संदर्भ में एक दो बातें और जोड़ने की मैं चेष्टा करता हूँ, पुनरावृत्ति के रूप में ही। हेलो, सही, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, मेहता सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। अगर अभी क्लियर है तो आप कुछ शब्दों में अपनी बात कह दें।
अब हमें लगता है, नहीं तो आपको मैं पुनः अलग से आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आज कनेक्टिविटी इशूज की वजह से आप जुड़ नहीं पाए। इस बात का हम सबको खेद है और सब लोग आपको भी सुनना चाहते थे। जी हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप बोल रहे हैं, रजनीश सर। ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रोफेसर सिंह जी के संदर्भ में चर्चा की थी, एक बड़ी विलक्षण चीज थी उनके अध्यापन की शैली भी मैंने देखी है और व्याख्यान की शैली भी। इन दोनों में ही एक विलक्षणता थी कि देखिए, प्रयास लोग ये करते हैं कि दूसरों को समझाएं, खुद समझने का प्रयास कम दिखता है ना। तो ये एक विलक्षण बात दिखती थी उनमें कि पहले किसी अवधारणा को यदि हमें अपने श्रोता वृंद तक या अपने छात्र वर्ग तक ले जाना है, तो पहले उसके साथ हमें स्वयं बड़ी परिश्रम की आवश्यकता है और उस अवधारणा को कितनी गंभीरता से उसकी समग्रता में हम समझें। पहले उन चीज़ों को खुद को समझाने का संकल्प लेना, यह एक शिक्षक की दृष्टि से, एक विद्वान की दृष्टि से, यह मैं उनमें पाता था और यह बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा कि उनके प्रयासों से और भी कई बड़े विद्वानों के प्रयास से, जिसमें मैं फिर से अपने गुरु प्रोफेसर कपिल कपूर जी की चर्चा करना चाहता हूँ। इन सबके सब प्रयासों से अंग्रेजी विभागों में भी बहुत सारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्व थे या विषय थे, वो शामिल किए गए और उनका बड़ा लाभ मिला अंग्रेजी के विद्यार्थियों को भी, इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी। मैं स्वयं भी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि इसकी कितनी बड़ी उपयोगिता है। और इसलिए दो स्तरों पर, एक तो कि इंडियन कंटेंट्स को वहाँ सिलेबस में, पाठ्यक्रम में स्थान देना, यह एक बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंटेंट के प्रति हमारा अप्रोच क्या हो, हम उसको कैसे पढ़ा रहे हैं। हम एक उसी विषय को ऐसे भी पढ़ा सकते हैं जैसे कि लगे कि 2500-3000 साल पुराना विषय हो और अभी से उसका कोई संबंध ना हो, और ठीक उसी विषय को इस रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि वह चिर नवीन लगे, अद्यतन लगे। तो यह तो उस विद्वान की, उस अध्यापक की अपनी साधना है, जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ। जैसे इंग्लिश में टी.एस. एलियट ने एक निबंध लिखा था, द मेटाफिजिकल पोएट्स। आप जानते हैं 17वीं शताब्दी के कवि थे ये सब, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, इन सब का है। तो उसके बाद 17वीं शताब्दी से 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी तक या अर्ली 20th सेंचुरी तक भी इन कवियों पर किसी का विशेष ध्यान नहीं। यह टी.एस. एलियट है जिसने अपने निबंध के माध्यम से फिर से एक अभिरुचि उत्पन्न कर दी इन सभी बड़े कवियों ने। और सच में उनकी कविता को लेकर के जो उसने सिद्धांत प्रतिपादित किए, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनके समालोचना में, टी.एस. एलियट की समालोचना में। तो यह एक दृष्टि की बात कि कैसे अर्वाचीन किसी पक्ष को या किसी विषय को अर्वाचीन बना करके अर्वाचीन परिप्रेक्ष्य में हम प्रस्तुत करते हैं। यह उसकी अपनी समझ, साधना, सब की है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है मुझे। और एक शिक्षक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, यह भी हमारी सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारी रूढ़ियाँ अनायास शामिल होती रहती हैं हमारी चर्चा में, या होती चली आई हैं शताब्दियों से। कई बार तो मैं देखता हूँ कि शताब्दियों से वो चर्चा चली आ रही है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई स्रोत नहीं है। तो इन सभी चर्चाओं पर फिर पुनः विचार करना, जैसे कि आप जानते होंगे इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन को, संस्कृत वालों को भी एक आदत लग चुकी है कि दर्शन आस्तिक और नास्तिक होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ये इसका कोई आधार हमें अब तक नहीं मिला। लेकिन जितनी भी आधुनिक शैली की किताबें लिखी जाती हैं आजकल, उन सब में आप पाएंगे कि भारतीय दर्शन, पहले ही अध्याय में विद्वान लेखक जो होते हैं आजकल के,
तो कहते हैं कि भारतीय दर्शन दो वर्गों में वर्गीकृत होता है, एक को आस्तिक दर्शन कहते हैं, दूसरे को नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक किस कारण से कहते हैं यह नहीं बताते। वेद के कारण कहते हैं, ईश्वर के कारण कहते हैं, पुनर्जन्म के कारण कहते हैं, प्रमाण के कारण कहते हैं, शुद्ध प्रमाण के कारण। यह बहुत स्पष्ट, ये सुविचारित नहीं होता और न हमारे किसी परंपरा के आचार्य ने कभी भी भारतीय दर्शन को इस रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये बीच में जिसको आप अभी कह रहे थे ना कि कॉलोनियल एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों का, ये उस परिवेश में उपजा हुआ एक दृष्टिकोण है। जैसे कि हेट्रोजीनियस हेट्रोडॉक्सी और ऑर्थोडॉक्सी के रूप में बिलीवर नॉन बिलीवर के सिस्टम में पूरे भारतीय ज्ञान तंत्र को प्रस्तुत कर दिया गया है इस काल में। तो इन सब जो इस प्रकार की जो रूढ़ियां या मिसकंसेप्शंस हैं, उनको भी दूर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और यही बड़े काम प्रोफेसर सिंह जी कर रहे थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने व्याख्यानों के माध्यम से यह बात बार बार वो रेखांकित करते थे और इसकी चर्चा आगे भी होनी चाहिए। हम अपनी कक्षाओं में कितना स्वस्थ मानस तैयार करते हैं, यह हमारी जिम्मेवारी, यह हमारा उत्तरदायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। धन्यवाद सर। तो अब कार्यक्रम की इस कड़ी के आखिरी आखिरी मतलब क्षणों में मैं अपने तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता केंद्र की तरफ से हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ईचा कोठारी जी, मेरे कुलीग डॉक्टर मुरुगेसन अरुमुगम जी की तरफ से और मेरे कुलपति जी की अनुपस्थिति में उनकी तरफ से भी मैं एक बार पुनः आप सभी वक्ताओं का, प्रोफेसर जगदीश शर्मा जी का, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला जी का, प्रोफेसर कमल मेहता जी का और प्रोफेसर सचिन केतकर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये आशा और उम्मीद करता हूं कि हमने जो एक ये पहल की है इसमें आप सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहेगा। तो आने वाले समय में जैसा मैं कल रजनीश सर से भी मेरी चर्चा हुई थी कि अवधेश सर को बताने के लिए ही एक सेशन की जरूरत थी, तो चूंकि आप सबको सुनना था इसलिए मैंने उनका एक बहुत ही ब्रीफ परिचय दिया है, बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया है। लेकिन उनके कुछ राइटअप्स हैं, वो मैं प्रयास करूंगा कि उनके जानने वाले लोगों के ही माध्यम से उन राइटअप्स के को डायरेक्ट यहाँ पे टेलीकास्ट किया जाएगा, उसको कोई रीड आउट करेगा और फिर उस पे जो भी क्वेरीज और ऑब्जर्वेशंस आएंगी उनके निदान के लिए मैं आप सबसे ही संपर्क करूंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू की तरफ से प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी को उनकी स्मृति में एक बार पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अभी तक 8374 लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है। तो वो सारे लोगों तक उनकी बातें और उनके माध्यम से आप सबकी ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें पहुंची, उन सब का भी मैं धन्यवाद करते हुए आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर अवधेश सर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद 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 सर। ओके सर। ओके सर। तो मित्रों, आपने देखा इस कार्यक्रम में देश के 4 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के 4 मुद्रज्ञ विद्वानों ने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई, अपने वक्तव्यों के माध्यम से हम सबका ज्ञानवर्धन किया और मेरे गुरु प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी की स्मृतियों को याद किया। मैं आपको पूरा आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी एक दिन के प्रोग्राम में कुछ मिनटों के कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बताया जा सकता था, ये तो एक पहल थी आप तक उनकी बातों को पहुंचाने का, उनसे आपको रूबरू कराने का। जो उनसे ऑलरेडी परिचित हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं, कहते हैं ना व्यक्ति का वो फिजिकल बॉडी से तो वो हमारे साथ नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे हर पल हर समय जो भी बातें उन्होंने मुझे सिखाई, जितना भी मुझे उनका सानिध्य मिला, उससे जितना कुछ मैंने सीखा, मैं कह सकता हूँ उन बातों का मेरे जीवन में, व्यक्तिगत कार्य प्रणाली में, मेरे बिहेवियर में मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको उतारने की, उसको सीखने की, और आप सब तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। एक बार पुनः उन सभी लोगों का जो मूर्त रूप में यहाँ मौजूद रहे और जो अमूर्त रूप में भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, स्पेशली मेरे गुरु और उनसे जुड़े वो सारे लोग, मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा। आप सबका प्रणाम करता हूँ। जितने लोग कार्यक्रम में जुड़े उनको फीडबैक फॉर्म में अभी शेयर करता हूँ। तो इन सब बातों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।